Good morning, student. This is part 3 of the chapter secondary sector, that is industry. In this video, we are going to learn about the impact of industrial practice on the ecosystem. When the industries are developed, it means it helps in the development of an economy, but it affects our environment also. Now, in this video, we are going to learn what is the impact of industrial practices on the ecosystem. First, we will learn what is ecosystem. An ecosystem or the ecological system can be defined as a group of living and non-living things which are interdependent and are found in a particular type of environment. Ecosystem या ecological system क्या है? It is defined as a group of living and non-living things जहाँ पे living और non-living दोनों रहते हैं, which are interdependent जो एक दूसरे के ऊपर depend हैं and are found in a particular type of environment. Accumulation of waste through the industrial practice is one of the major reasons for damaging the ecosystem. इन्होंने क्या कहा, इंडस्ट्रियल्स की जो प्रैक्टिसेस मतलब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट से हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है. नाउ व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. Deforestation means the removal of the forest or the destruction of the forest area for economic gains. हम trees को cut कर रहे हैं, it means we are doing the deforestation. There are many causes responsible for deforestation. First one, constructing dams have resulted in erosion of more and more river channels and land on both sides of the various rivers. जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो क्या होता है बेटा, जो रिवर चैनल्स के साइड्स की लैंड्स हैं वो सब डैमेज हो रही हैं. इवन फॉरेस्ट वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पस. हम इसके लिए भी वुड्स को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं. नेक्स्ट, मेनी इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर ही बेस्ड हैं एज अ रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल पेपर, फर्नीचर, प्लाईवुड, ड्रग्स एक्सेट्रा, दे आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट. इट मीन्स हम इन सब के लिए रॉ मटेरियल के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द impact of industrialization. Second one, pollution. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. Pollution की वजह से क्या हो रहा है, environment में harmful substance add up हो रहा है. These harmful materials are called pollutants. और इस harmful materials को क्या कहा जाता है, pollutants. Pollutants can be natural such as volcanic ash. Pollutant natural भी हो सकती है. They can also be created by human activities such as trash or runoff produced by the factories. Pollutant damage the quality of air, water and land. Pollutants natural भी add up होता है और human activities की वजह से भी होता है. और जब pollutants add up होते हैं तो बेटा उससे air की quality, water की quality, land की quality, सब की qualities destroy हो जाती हैं. As stated before, there are the different types of pollution which are either caused by natural events or by man-made activities. They are further classified into the following types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. We all know that there are the 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. Now, first we are going to learn about air pollution. Air pollution refers to the release of harmful contaminants into the earth's atmosphere. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हार्मफुल कॉन्टेमिनेंट्स मतलब हार्मफुल पार्टिकल्स जैसे केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, स्मोक्स हैं, वो सब ऐड होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन. These contaminants are quite determinal and in some cases pose serious health issues. और इस एयर पे अगर हम कंटिन्यूसली ब्रीथ करते रहेंगे तो इससे हम लोग को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. Some causes that contribute to air pollution are burning fossil fuels, mining operation, exhaust gases from industries and the factories. These are the some causes because of which air pollution occurs. Next is water pollution. Water pollution is said to occur when toxic pollutants and particulate matter are introduced into water bodies such as lakes, rivers and seas.
वाटर पोल्यूशन कब अकर होता है? जब पोल्यूटेंट्स हैं वो वाटर बॉडीज़ में एडअप हो जाएं, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर ऐड नहीं थे वो अब उसके अंदर मिक्स हो गए हैं, उसकी वजह से वाटर की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। These contaminants are generally introduced by human activities like improper sewage treatment and oil spills. ये वाटर पोल्यूशन ऑलमोस्ट जो भी होता है बेटा वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। एंड देयर आर सम कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशंस आर डंपिंग द सॉलिड वेस्ट इन अ वाटर बॉडीज, disposing untreated industrial sewage into water bodies, human and animal waste, agriculture runoff containing pesticides and fertilizers. हम लोग जो सॉलिड वेस्ट है वो ऐसे ही वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप कर देते हैं, रिवर्स लेक्स के अंदर, या जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है वो सीधा वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर्स लेक्स के अंदर हम सीधा डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वाटर की वो सब डिस्ट्रॉय हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन अकर्स। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन. Soil pollution refers to the degradation of land due to the presence of chemicals or other man-made substances in the soil. Soil की मतलब जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, एंड दैट हैपन बिकॉज ऑफ द केमिकल्स और द man-made substances which are adding in the soil. These can drastically impact life directly or indirectly. सॉइल पोल्यूशन हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट करता है बेटा, बिकॉज प्लांट्स वे ग्रोन इन दीज सॉइल्स दे आर नॉट एज हेल्दी एज दे आर ग्रोन इन अ फ्रेश सॉइल. For instance, any toxic chemical present in the soil will get absorbed by the plants, and since plants are producers in an environment, it gets passed up through the food chain. क्योंकि plants तो producers हैं environment के और वो उससे फूड चेन से सबके अंदर पास हो जाता है. एंड दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर improper industrial waste disposals, oil spills, acid rain which cause air pollution also, mining activities, industrial accidents. These are the causes of soil pollution. Next is noise pollution. Noise pollution refers to the excessive amount of noise in the surrounding that disturbs the nature balance. जब बहुत तेज वॉइस होती है जो आपके सराउंडिंग्स में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज़ है जो आपको इरिटेट करे, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉइज़ पोल्यूशन. यूजुअली इट इज़ मैन मेड थ्रू सर्टेन नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक वॉल्केनोज कैन कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन. नॉर्मली नॉइज़ पोल्यूशन मैन मेड होता है, बट कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है. फॉर एग्जाम्पल द वॉल्केनोज. Noise pollution has several contributors which include industry-oriented noises such as heavy machines, mills, factories, etc. Transportation noises from vehicles, aeroplanes. Construction noises, noise from social events that is loudspeakers, firecrackers. Noise pollution has now become very common due to dense urbanization and industrialization. और noise pollution और भी बढ़ता जा रहा है because of urbanization and industrialization. I hope it is clear about the various types of the pollutions and their impacts on the environment. Now, measures to protect ecosystem. How can we protect our ecosystem from these impacts? First one, afforestation. The most significant method to preserve the environment is to plant the trees. हम अगर environment को protect करना चाहते हैं तो we have to plant more and more trees. Trees may take longer to grow, but they serve the next generation. Trees टाइम लगते हैं ट्रीज़ को ग्रोथ होने में, बट वो आपकी कई सारी जनरेशन्स को हेल्प करते हैं टू लिव एन हेल्दी लाइफ. Trees provide shade and eliminate the need for air conditioning. Trees are used in a paper industry, so you can save the trees by minimizing the use of your paper. For example, you can print or write on both the sides. हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे. ट्रीज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, बोथ सॉइल एंड द एयर पोल्यूशन. क्यों? क्योंकि सॉइल पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि वो सॉइल को बाइंड कर लेता है उसकी रूट्स, और एयर पोल्यूशन को अपने फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करके. तो एफोरेस्टेशन हेल्प्स इन द प्रोटेक्ट ऑफ इको सिस्टम. नेक्स्ट, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कराना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर इको सिस्टम. सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग मेथड्स.
First, segregation of waste. As the methods of disposal is different for different types of waste, आप अलग अलग वेस्ट को अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हो. Therefore, it is necessary that the waste should be first segregated according to their category. इसलिए ज़रूरी है कि वेस्ट को सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग करना उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली. For example, hospital waste can be categorized and segregated according to their weight, density and constituents. आप हॉस्पिटल वेस्ट को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हो, उसके वेट, उसकी डेंसिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस चीज़ का वेस्ट है. In the same way, we will divide the waste in the 4 categories. The first one is infectious waste. It is a waste from surgery and the autopsies on patients with infectious disease. These may contain pathogens in dangerous concentration or quantities that, if exposed, can cause diseases. अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन को एक्सपोज ऑफ होते हैं उससे, तो उनको भी उससे इन्फेक्शन हो सकता है, डिसीज़ हो सकती है. तो सबसे पहले हम उन वेस्ट को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे. सेकेंड इज़ पैथोलॉजिकल वेस्ट. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड्स टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन फ्लैश, फूड, फ्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. ये अलग वेस्ट हैं, इनको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, तो हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा है. नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल वेस्ट. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड्स द ड्रग्स एंड द केमिकल्स दैट आर नो लॉन्गर इन यूज़, जो यूज़ के नहीं है, एक्सपायरी हो चुके हैं, उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे. Then the last is radioactive waste. It is a waste which includes solid, liquid or gaseous waste which are contaminated with radioactive substances which are used in diagnosis and the treatment of waste. यहाँ ये सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों फॉर्म में होते हैं और जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं जो डायग्नोज के लिए यूज़ होते थे. बट नाउ दे आर इन अ वेस्ट फॉर्म, मीन्स वी हैव टू सेग्रीगेट इट बिकॉज वी हैव टू डिस्पोज अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज. नेक्स्ट इज डंपिंग. Waste dumping to some extent represent the final stage of any disposal sequence. जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ ऑलमोस्ट द फाइनल स्टेज. फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द डंपिंग. फर्स्ट इज लैंडफिलिंग. इट इज़ एन इम्प्रूव फॉर्म ऑफ ओपन डंपिंग. लैंडफिलिंग ओपन डंपिंग का इम्प्रूव फॉर्म ही है बेटा. इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग द रिफ्यूज ऑन लैंड without creating a hazard to the public health or safety. मतलब पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट ना हो, हम उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर पाएँ. बाय यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग. हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट, कंपोस्टिंग. Composting is a natural process in which biodegradable materials are decomposed by the microbes and converted into manures. कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उसको डिकम्पोज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और उसको मेन्योर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. एंड कंपोस्ट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट बाय आइदर एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटीज़. इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आइदर फ्रॉम एरोबिक और एनारोबिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स विद द प्रेजेंस ऑफ air and in the absence of air. Next is drainage. Removal of surface or a substance water from a given area by natural or artificial means is called drainage. पानी को remove करना in a proper way by natural or by artificial means, that we call it as drainage. The essential feature of any type of drainage is to provide an open, adequate and readily accessible channels. जो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमेशा ओपन हो, एडिक्वेट हो, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी इन द सेंस प्रॉपर स्पेस हो वहाँ पे उसको वाटर को डिस्पोज ऑफ के लिए, एंड रेडली एसेसेबल चैनल्स थ्रू विच सरफेस और सबसॉइल वाटर्स कैन फ्लो. आई होप इट इज़ क्लियर हाउ वी कैन सेव आवर इकोसिस्टम बाय डिस्पोजिंग द वेस्ट according to their categories and by following the different methods, by planting the trees, by composting, by landfilling. Now, it's a time for an assignment. Question number 1. What is industrialization? Industrialization क्या है? You have to write the definition here.
Question number 2, explain how agriculture supports industries. Give 2 points. यहाँ पे मैंने आपको contribution of agriculture to industry बताया है. You have to write any 2 points here. What do you mean by ecosystem? Ecosystem की definition लिखनी है. Next, explain the importance of industries for an economic development. Industries economic development में कैसे help करती है. Next, what are the various measures to save our ecosystem? हम क्या steps लें ecosystem को save करने के लिए. I hope all these questions are clear. Complete this work in your copies and thank you students.